Good evening, ladies and gentlemen. Let me welcome all my viewers once again today on Beyond Sugar. Beyond Sugar, as you know, is created for all of you in scientific collaboration with RSSDI and Indian Society of Nephrology so that we can keep you updated with the related scientific information and you can take good care of your health. In the month of March, World Kidney Day is observed globally. And it is our endeavor this year to spread awareness about good kidney health so that you are aware that what are the things you need to be taken care of related to your kidney. I'm very glad today to welcome our expert speaker, Dr. Dinesh Khuller. Sir, welcome to the show. Thank you very much. Thank you. Yeah. Today we will be talking about something which is generally not touched about whenever it comes to kidney and nephrology. We are concerned about when we talk about dialysis or kidney transplant. But today we'll take a step back and see that how do we protect our kidneys in a good way. But before I start talking about that and take your questions, let me formally introduce Dr. Khuller to all of you. He is one of the leading nephrologists in our country and a well-known personality. After doing his graduation and masters from DMC Ludhiana, he went to prestigious PGI Chandigarh to do his super specialized training in nephrology way back in 1993. And for last 3 decades, he's serving his patients who come to him for kidney ailments. In these last 3 decades, he has been associated with almost 5,000 kidney transplants, and lakhs of patients are under his care. So those who have been meeting him, knowing him, also know that he is very accessible to his patients. Uh, but along with being the patient care, he is also a very enriched academician. He is involved in training and teaching of upcoming nephrologists in the country and also in the neighboring country of Nepal. He has various research publications, more than 60 research publications he has to his credit. And at the same time, he is also involved in various landmark clinical trials. He has also authored and edited books, popular books for his fellow physicians, like Lupus Nephritis and Renal Transplant Therapy and Pocus Handbook of Physician. He has also been the president of Delhi Society of Nephrologists and has been on the council of Indian Society of Nephrologists. Many rewards to his credit. Actually, he is an institution in himself, and therefore let me just bring him on the stage and request him to set up the opening remarks and the context for all of you. Dr. Kuller, welcome and over to you. Well, thank you very much, Sanjeev, for that very kind introduction. Well, you see, I must compliment you to have chosen kidney disease as the subject of topic of discussion, because we are all, as nephrologists, going to celebrate the World Kidney Day again in a couple of days. Because this is celebrated every second Thursday of every March every year, world over, and this is when we definitely would love to one more time tell our patients that we really care for them. We certainly would not want them to have any kind of kidney disease in the first place, and God forbid if they ever fall in the trap of this kind of situation. We would certainly do our best to try and help as much as possible as whatever we can to take the best possible care of their health as possible, as I said. So I'm glad that we are going to talk about the ways to protect the kidneys, so that we are able to make a huge contribution towards the well-being of our fellow countrymen and, of course, all the citizens across the world. With that, I think I would certainly be open to any kind of queries, and I would try to answer to the best of my capability. Yeah, Dr. Kuller, let's begin for our audiences to understand a little wider question to begin with, that for everyone's understanding, if you can tell that what is actually the importance and the vital functions which are performed by kidneys for a healthy human body. We talk a lot about other organs, but I think today we love to understand from you the role of kidneys.
That's a very pertinent question, Sanjeev, because I know everyone knows that kidneys are responsible for making urine, but that's not the only function they do. In fact, kidneys are wonderfully doing so much for our body that we realize their importance only once they uh, tend to go on strike. You see, it's not just, as I said, the formation of urine, which would mean getting rid of the extra water in the body, but also getting rid of the various impurities, the waste products which get formed after we have consumed whatever we are taking by way of diet, so that that gets rid from the body. But this is only one aspect of the kidney function. They also do a lot as far as the maintenance of the various balances in the body are concerned, be it the water balance, the electrolyte imbalance. You would have heard about sodium, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, etc. Everything is controlled via the kidney function. Only once we lose this pivotal kidney function that we realize things are not the same for us, for our patients. Now, secondly, as I said, there are functions beyond this, or kuch hote hain which where we say the endocrinological functions. So you'll be surprised to know that kidneys are the seat of production of hemoglobin in our body. हम लोग सोचते हैं हड्डी से blood बनता है. Well, yeah, that's maybe the truth, but what sends the signal to the bones to form the hemoglobin? That's the kidneys. Kidneys विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं, जो हम धूप से लेते हैं. वी नो वी गेट लॉट ऑफ vitamin D from the sunlight, but that is useless to our body till the time that goes to the liver and then to the kidney to get activated. और ये एक्टिवेटेड विटामिन डी ही हमारी हड्डियों को ताकत देती है. ब्लड प्रेशर कंट्रोल किडनीज करती हैं. So when, as I said, they go on strike, we get all the symptoms related to the kidney function, which means पानी बॉडी में भर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट imbalance होने शुरू हो जाते हैं, and they can play havoc with one's life, be it sodium or potassium or calcium or you name it, and the electrolyte can play havoc with one's health. So it's extremely important to realize that those two organs measuring about 9 centimeters each, weighing about 150 grams, situated in the back of our, not in the front, the back side of our abdomen, have a lot of role to play. Yeah. So a lot of role to play, as Dr. Khuller says, and he cautions that you only know the importance when they decide to go on strike. So today, we'll understand from him that kidneys should not go on strike, and how do we protect that situation. Sir, I think the obvious question which comes to be that kidneys should not go on strike. Are there any risk factors which can lead to kidney disease? या फिर are there any specific group of people who are at the highest risk of getting a kidney disease? So, well, before I answer that, let me try to explain the things a little differently. When kidneys do not function optimally, it can happen on a temporary basis, which is acute kidney injury. It can happen to perfectly well functioning kidneys. Suddenly, it's like a bolt from the blue, and they stop working. And this is temporary. This is fortunately potentially reversible. अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो किडनीज भी रिकवर हो जाती हैं. बट जो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमनली इज व्हाट इज जनरली मोर fearful, because that is irreversible, something which is called chronic kidney disease. धीरे धीरे आता है, over months to years, and it's a point of no return. Once the kidneys lose that particular function on a permanent basis, it's a point of no return for the kidneys. Why does it happen? We know हम रोज अक्सर बात करते हैं, but then we tend to ignore the relative importance of things like diabetes and high blood pressure. So let me give you some figures. It is generally believed, just to try to tell you the gravity of situation, it is generally believed that 10% of the Indian population has some kind of chronic kidney disease. Chronic means permanent basis. 140 crore, 10% means almost like 14 crores of Indian population has some kind of chronic kidney disease, and by definition, it means it is likely to progress and ultimately reach to an extent whereby the body simply cannot cope up with the day to day
activity of the rest of the organs without well functioning kidneys. Now, another figure: India has the largest contribution via the diabetic patients. That's not something to be proud of. And we certainly need to make amends as far as this is concerned. About 10 crore of Indian patients, Indian population are diabetics. And it's generally believed about 40% of them have a significantly advanced kidney disease, which means 4 crore of Indians are suffering from something called diabetic kidney disease, which again is progressive. And and we know we will not be able to cope up with this kind of financial burden if more and more of these patients have an advancing chronic kidney disease and finally land up to a stage where the only means of their survival will depend either on dialysis or transplantation, both very expensive. So the need of the hour is to prevent, and prevent at every step, not allowing them to become diabetics and or hypertensives. And if they, god forbid, they become, then taking exceptionally good care of them so that the disease does not affect the kidneys. And I'm saying diabetes or hypertension does not affect the kidneys. And if that also happens, we have to find ways to slow down the rate of progression. And that's something very, very key for me as a nephrologist, because the other aspects are common to every one of us. We have to take a collective responsibility, both as average citizens as well as family physicians, and then finally the nephrologists. जी आई थिंक सर जो आपने numbers बताए that almost 10% population may get affected or may be affected by chronic kidney disease in some way. It's of course it's a huge number. और आपने risk factors भी बताए कि जो लोग जिनको diabetes है या hypertension है या related चीजें, and then you emphasized on importance that हर step के ऊपर we need to take steps to reduce the chances of kidney disease. For a common man, sir, can you help us understand कि कैसे identify करे someone who may be having early diabetes or early hypertension? Are there any signs and symptoms through which he can find out that he is undergoing a kidney disease and he should be talking to his doctor about it? I think that's the most important question, Sanjeev, and I must compliment you for bringing that up, because by the time kidneys get involved on a permanent basis, that's chronic kidney disease, either via diabetes or high blood pressure or chronic glomerulonephritis, some autoimmune, where the body's immunity starts working its own self, it's too late. And unless the diabetic patients take good care of themselves, unless they are screening themselves for the possibility of kidney disease, it'll be too late if you wait for the symptoms. Well, talking about the symptoms, they come up when it's too late, when the kidney function has significantly deteriorated, and patients have typically more than 50% of their kidney function. Only then, even the most subtle of the symptoms will start appearing. And by the time it's too advanced, I think it's too late. But then the symptoms can be very, very bad. They start off with just a loss of appetite, then nausea, then vomiting, lack of uh, I think so they have inertia as far as taking up a job is concerned. There is a lot of fatigability, and then finally nagging symptoms like itching, pruritus, and then they start throwing up, become drowsy and drowsy. But that is when the disease has advanced really too much, and we are today wanting to talk about not allowing the disease to go that far. So which means we are going to um, emphasize the importance of preventing the disease, or if it happens, then how to slow down the rate of progression. That's right. So Dr. Kuller ने बताए हमें my viewers के लिए that signs and symptoms, what can be those symptoms. But then at the same time उन्होंने ये भी बताया कि by the time symptoms come, there's a huge damage probably already been done. So we don't need to wait for the symptoms to happen, to pick up the kidney disease.
wiser people will, go and pick it up early. We'll understand, sir, now from you, that what should be done. Let's say if someone is having a risk factor, जो आपने commonly बताया कि diabetes है, किसी को hypertension है या family history है, so what should he be doing? Should he be screening himself for something, for some test of kidney disease, and how this is done? Can you help us understand? So, Sanjeev ji, before I answer, so let me just complete what I was wanting to convey to our viewers today, and that is why would the symptoms happen? They would happen because the kidneys are not able to do what they were supposed to do. वो पानी पूरा नहीं निकाल पाती हैं, शरीर में पानी भर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। किडनीज ने हीमोग्लोबिन बनाना था, खून की बनने की प्रोसेस स्टार्ट करनी थी। नाउ हीमोग्लोबिन टेक्स अ हिट सो दैट दे गेट एनीमिया रिलेटेड सिम्टम्स। उनकी बोन्स ठीक से नहीं बन पाती हैं, ताकत नहीं आती है बिकॉज विटामिन डी इज नॉट देयर। एंड जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, so they will cause symptoms accordingly. But that, again, to reiterate what I said earlier, comes up very late. So the importance is in what you've asked, and that is the screening for these kind of diseases. And screening, fortunately, is very easy. If someone wants to know that he or she is a diabetic, that I think is very easy. We just have to get the blood glucose level and a thing called glycosylated hemoglobin, which tells us the control of the diabetes over the last 3 months. HbA1c, as the test is called. This is to find out whether a given patient is diabetic or not. A fasting sample will tell us whether he or she is diabetic or not. सिमिलरली ब्लड प्रेशर चेक करना सबसे एक बेसिक चीज़ है। ब्लड प्रेशर की मशीन से करिए। आइडियली इट शुड बी लेस देन 130 एंड 80 से भी कम होना चाहिए। और अगर 140 90 से ऊपर है, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, फॉर एवरी वन टू रिमेंबर दैट वी शुड नेवर अलाउ द ब्लड प्रेशर टू बी मोर देन 140 by 90 to go unnoticed. You should seek help. एंड ऑफ कोर्स वी शुड एंश्योर कि हमने ब्लड प्रेशर ठीक तरीके से लिया है, अंडर कंट्रोल कंडीशंस लिया है, टेंशन में और भाग के और गलत टाइम पे नहीं लिया है. सो दैट्स फॉर सम अदर टाइम. बट व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग फॉर द किडनी डिजीज, अगेन वेरी इजी टूल्स. एक डायबिटिक है, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इनको पता होना चाहिए कि दे आर एट हायर रिस्क ऑफ हैविंग किडनी डिजीज. सो ऑल दैट इट नीड्स इज एक सिंपल टेस्ट लाइक यूरिन का, रूटीन यूरिन, और एक यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, वेरी बेसिक टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाना है, एंड यू विल कम टू नो वेदर किडनी इज एक्सक्रीटिंग albumin in the urine or not, which is an abnormal thing. Normally albumin हमारी ताकत है, हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती है एल्ब्यूमिन को लूज करना. सो इफ किडनीज आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, इफ द फिल्टर इज लीकी, सो यूरिन में प्रोटीन एल्ब्यूमिन लीक करना शुरू कर जाती है. अगर 30 मिलीग्राम से ज्यादा एल्ब्यूमिन निकलती है एक दिन में, और एक स्पॉट टेस्ट है, एक स्पॉट टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि यूरिन में कितना एल्ब्यूमिन निकल रहा है. एक दूसरा टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन. एक सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आई थिंक एक टेस्ट अगर साल में एक बार ये डायबिटिक्स को करना पड़े, और ये मुश्किल से 200-400-500 के, इवन इन द कॉस्टलीस्ट ऑफ सेंटर्स, इट विल नॉट कॉस्ट मोर देन 500 to 600 रुपीज ऑन ए ईयरली बेसिस. इससे आसान काम नहीं हो सकता. और क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट वो है जो हमें आइडिया दे देता है कि किसी की किडनीज कितना काम कर देती है. इफ द किडनीज आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, the creatinine will be less than 1. And the importance is, by the time it has increased to 2, 50% of the kidney function has been lost. So that is the importance of a very basic test called creatinine. So I don't think it's difficult. किसी को आज आपने बता दिया, and especially after the age of 40, आप डायबिटिक हैं कि नहीं आप पता करिए. और उससे पहले भी अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं, once in a year ये easy टेस्ट करवाने हैं. Now, diabetes and hypertension are not the only cause. They may be the majority of the times the causes of causing kidney damage on a permanent basis. But there are issues like a very common disease which happens in relatively younger age groups, which is rampant in our country as well. The commonest cause of glomerulonephritis is IgA nephropathy. I'm sure not too many people would have heard about this entity, but let me tell you, this is the commonest cause, and we were, as doctors, also missing it a lot. There has been a
spurt, maybe we believe as nephrologists after COVID happened, but then maybe it was always there. Now, this happens even in younger people, like 20 years of age, 30 years of age, and by the time they're 40 or 50, they come to us with advanced chronic kidney disease, and we realize that they may have had IgA nephropathy. So, उनमें भी क्या करना है? सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करना है और यूरिन में प्रोटीन चेक करनी है और क्रिएटिनिन चेक करनी है. सो व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज टुडे इज कि हमें 40 साल का फिगर नहीं दिमाग में रखना. आई थिंक if we try to start the screening process relatively earlier, maybe at 20 years, 25 years of age, हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि 20 years में कोई ठीक पाया गया है उसको 5 साल अब टच ना करें, और 40 साल में किसी को स्क्रीन किया है तो उसको हर साल स्क्रीन करें. But the importance lies in the screening, because if caught at the right time, you can make a huge difference in the outcome, in the final outcome of a given kidney disease. Okay, so I think thank you so very much to explain this in such an elaborate manner for our viewers. और जैसा कि डॉक्टर खुल्लर ने बताया कि सबसे पहले तो आप अपनी डायबिटीज और हाइपरटेंशन को ही कंट्रोल में रखें और उसकी रेगुलर जांच करें, और आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में भी बताया. एंड प्लस ही टॉक्ड अबाउट सिंपल टेस्ट व्हिच कैन बी डन. If you are not having any risk factors, you should start early the screening at the age of 20 years only. And if you're having risk factors, maybe then post 40 you should definitely be doing. Sir, the test which you shared, UACR आपने बताया या albumin check करना, so is it easily available? Generally आमतौर पर अगर किसी को डायबिटीज हाइपरटेंशन होती है तो ही इज meeting his family physician or internal medicine specialist nearby. So would this test be available there, या फिर उसे कहीं हॉस्पिटल में जाके या कहीं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास से टेस्ट कराने पड़ेंगे? Yeah, again, a very important question. I think we have to understand we are just about two or maybe 2,500 nephrologists in the country taking care of such a large patient population जिनकी kidneys में problem है. So definitely हम totally rely कर रहे हैं on the family physicians, because ये first contact point है और यही लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं कि कौन डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट है एनुअल तौर पे. ये दे आर मच क्लोजर टू द पेशेंट. सबसे पहले पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो अपने पास में जिन डॉक्टर्स को वो जानता है सबसे पहले उन्हीं के पास फेथ से जाएंगे, और फैमिली फिजिशियन का बहुत बड़ा रोल है टू हेल्प अस स्क्रीन दीज पेशेंट्स. तो ये तो एक तरफ हो गया. दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है दैट बहुत वैलिड है. ये आसान टेस्ट है. अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, आई मस्ट कन्फेस कि हमारे देश में लेबोरेटरी फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी टिल अबाउट मे बी आज से 20 साल 25 साल पहले. बट आज हमें खुशी है कि एक एवरेज स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव कर गया है. दूर दूर तक इन रिमोट एरियाज ऑल्सो आज अच्छी लैब्स उपलब्ध हैं जो कि ये बेसिक से टेस्ट जरूर कर देती हैं. सो आई थिंक हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी है. वी जस्ट हैव टू मेक ईच एंड एवरीवन अवेयर कि हमें जरूरत है पेशेंट्स को सही टाइम पे स्क्रीन करने की, और एक बहुत बड़ा रोल है इन फैमिली फिजिशियंस का हमें हेल्प करने का, हमारी सारी जी पॉपुलेशन को हेल्प करने का. जी सर, एक since being a nephrologist and seeing thousands of patients, एक बिहेवियर रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर. कई बार हमारी यंगर पॉपुलेशन जो एक सेंस ऑफ डिनाइल होता है उसको 30 to 40 years 45 years की, नहीं यार मुझे तो नहीं हो सकता ये. और कई बार एक थोड़ा सा सेंस ऑफ फियर भी होता है कि मैं जाके कहीं टेस्ट करवाया मैंने और कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम निकल आई तो फिर मैं क्या करूंगा. सो what's your advice to such group of patients or people, if you would like to say something? Yeah, I understand what you are saying. और ये बहुत मुश्किल है. ये सबसे ज्यादा हमारे कीमती साल होते हैं. हर एक आदमी अपना कैरियर बनाने में तुला है, एम्बिशियस है, लाइफ एंजॉय करना चाहता है. बीमारी की बात कोई नहीं करना चाहता. मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई. इफ वी कैच द डिजीज यंग, वी कैन मेक ए डिफरेंस. हम अगर बीमारी को सही टाइम पे पकड़ लेते हैं, हम बहुत एक डिफरेंस डाल सकते हैं. तो यंगर जनरेशन को मैंने यही बोलना है. मैंने अभी उदाहरण दिया आईजीए नेफ्रोपैथी का, ऐसे काउंटलेस अदर एग्जांपल्स भी हैं. तो अगर हम बीमारी को पकड़ लेते हैं, आज हुई और हमने महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर पकड़ लिया, हम बहुत अंतर ला सकते हैं. वही बीमारी अगर 2-3 साल के बाद पकड़ी गई, बाय दैट टाइम किडनी में परमानेंट डैमेज हो चुकी है, किडनी में स्कार्स बन चुके हैं, उनको हम अनडू नहीं कर सकते. सो माय रिक्वेस्ट टू द यंगर जनरेशन इज प्लीज
You are the torch bearers. You are the future of this country. Please take good care of your health. और मैंने बताया कितना आसान है ये जानना कि आपको किडनी डिजीज है कि नहीं. So this is important. Don't ignore. Your health is important. Go and get yourself screened. सर आपसे और ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर आपने सही समय पर आइडेंटिफाई कर ली अगर किडनी डिजीज जल्दी स्क्रीनिंग करके, so as a doctor then what are the approaches you have, then can you stop the kidney disease there if caught early and reverse it, or at least slow down the progression of it. और अगर slow down कर सकते हैं तो how does it help the longevity of life? Can you just help us understand that? संजीव जी, जो मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ, दिस इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वी वर ऑलवेज सेइंग टिल अबाउट 10 years ago. हम 10 साल पहले बोलते थे कि अगर किसी को परमानेंट किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो हम बस ये है कि अगर जो चीज़ 2 साल में होनी थी हम उसको मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल में खींच लेंगे, लेकिन इनएविटेबल विल हैपन. जो बीमारी एक बारी शुरुआत कर दी किडनी डिजीज की, वो अब किडनीज को पूरी तरह खराब करके ही छोड़ेगी. लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 10 साल प्रिसाइजली एक रेवोल्यूशनरी साल है एज फार एज द किडनी हेल्थ इज कंसर्न. सडनली हमारे जो आर्मामेंटेरियम में खूब सारे हथियार आ गए हैं. हमारे पास बहुत थोड़े हथियार थे अपने लोगों को, अपने पेशेंट्स की हेल्प करने में. सडनली आई वुड से एक बम्बार्डमेंट हो गई है एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड. इन हथियारों की मदद लेके वी कैन एक्चुअली, ऑन वन हैंड हम तो जो पहले अचीव नहीं कर सकते थे अब हम वो भी कर पा रहे हैं. प्रोटीन जो यूरिन में निकलनी शुरू हो जाती थी एक स्टेज के ज़्यादा, बहुत थोड़ी बीमारियां थी जिसमें हम एक अंतर ला सकते थे और उनको पूरी तरह से ठीक कर लेते थे. मेजॉरिटी में हम कई बारी नहीं हेल्प कर सकते थे. अब बिल्कुल उल्टा हो गया है. अब इतने सारे हमारे पास अच्छे मेडिसिन अवेलेबल उपलब्ध हो गई हैं कि हम काफ़ी डिफरेंस ला सकते हैं. प्रोटीन कम हो जाती है, यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है, बढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है. जहाँ 2 साल में होना था अब 10-15 साल की बातें शुरू हो गई हैं. एक-एक साल मायने रखता है. सो अब एज़ यू कैन सी हम काफ़ी एज़ किडनी स्पेशलिस्ट we are very happy with what the science has achieved in the last 10 years. और there is lot which can actually now be achieved. इसीलिए मेरी गुजारिश है सबसे, प्लीज अपनी बीमारी को सही टाइम पे पकड़ें, बिकॉज दैट इज द रियल गेम चेंजर आई वुड से. Yeah, thank you. And sir, what about, we have talked about the early screening, catching it early and then treating it early. Any recommendations, you have, sir, on lifestyle modifications for, our viewers that which help सबसे them dietary or which helps them control it early? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हम डेलिबरेटली आज मैंने लाइफस्टाइल की बात टुवर्ड्स एंड के लिए छोड़ी थी, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है हम बात स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और वहीं खत्म हो जाती है और जो कई इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वो डिस्कस ही नहीं होते हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि हम आज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं. आज भी कोई हमसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो लाइफस्टाइल है. लाइफस्टाइल मीन्स डायबिटीज हुई क्यों थी? बिकॉज हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई. हम सडनली हमारा अफ्लुएंट लाइफस्टाइल हो गया और हमारा खान पान और एवरीथिंग हैज चेंज्ड. सो ऊपर से पोल्यूशन जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऊपर से हम पता नहीं क्या क्या मिलावटी खाना खा रहे हैं आजकल, स्टार्टिंग फ्रॉम वट एवर आप यू नेम इट, एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी वी आर अडल्टरेटेड. सो ओबेसिटी हमने गलत किया, सेडेंट्री लाइफ की, डायबिटीज हो गई, मोटापा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और ऊपर से स्मोकिंग, ऊपर से ड्रग अब्यूज. सो ये सारी चीजें अच्छी वाली किडनीज को तबाह करने पे तुली हुई हैं. सो आई थिंक जिस देश से योगा निकली है, अगर हम वो देशवासी योगा को ना अपनाएं तो बड़े दुख की बात है. सो एक चीज रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, और सबसे आसान चीज, सबसे सस्ती चीज एक्सरसाइज, ठीक खाना पीना, स्मोकिंग क्विट करनी, मोटापा नहीं होने देना, अगर हुआ है तो लूज करें और आइडियल बॉडी वेट पे आए. ये चीजें हैं जिनकी बहुत ही बड़ा रोल है, बिकॉज अगर इसी स्टेज पे हम कंट्रोल कर लें तो शायद जो 10 करोड़ डायबिटिक्स हैं वो बहुत थोड़े रह जाएंगे बहुत जल्दी. तो आई थिंक on one hand we are so proud that our country is doing so well. I just hope and pray that whatever we are achieving via the collective effort of all the citizens is not going to go waste
via the expenditure which the government or all the health agencies are going to incur on taking good care of our health. I think अगर हम prevent करते हैं तो indirectly हम देश की उन्नति में हम contribute कर रहे हैं. Thank you so very much, Dr. Kohler, on emphasizing these things and helping our viewers understand that. Sir, in the end, since we are running out of time, maybe in last few comments from you, even after all this has been done, you have identified, you have treated the patient early, but there may be some scenarios where the kidney disease may still progress, and patients may require dialysis or even the kidney transplant later on. So, any comments from you that how are the facilities in our country related to this? And since you are an expert yourself in this, so anything you like to share with our viewers? So when we talk about the facilities, I must say much, much better than what they were when I set about becoming a nephrologist. I could see the magic in a dialysis machine, and that is what compelled me to become a nephrologist. But admittedly, the quality of dialysis then was not up to the mark, not any longer. We in India can now proudly say that we can offer dialysis which meets up the world's best standards. सो आज मैं एक मिथ्स जो ब्रेक करना चाहता हूँ. लोग सोचते हैं और डेस्पोंडेंट हो जाते हैं और ये सोचते हैं अब किडनीज खराब हो गई, अब हमारा क्या होगा. तो मैं आपको सक्सेस स्टोरीज बताने की कोशिश करूंगा. अगर टाइम परमिट होता तो आई थिंक एक दिन लग जाएगा टू काउंट दी सक्सेस स्टोरीज, बट जो अभी एकदम से दिमाग में आ रही हैं, आई विल टेल यू. अभी अभी मेरी बात हुई एक हमारे पेशेंट से जो जो पेरिटोनियल डायलिसिस में है. लोग कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस जो होम डायलिसिस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाती हैं. तो मेरे पेशेंट का जो अब पिछले साल माइग्रेट कर गए और अब टोरंटो में सेटल्ड हैं, 20 साल यहाँ थे और 1 साल से टोरंटो में, 21 साल उनको हो गए और एक भी एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं हुआ. आज उन्होंने वर्ल्ड किडनी डे के ऊपर सबको ग्रीट किया है. दैट्स वन. हमारे कई पेशेंट्स हैं जो पिछले 30 साल से ट्रांसप्लांट के ऊपर चल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर एक फेल भी हो गया, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है. कई बार तो एक सिंगल ट्रांसप्लांट पिछले 25-30 साल से चल रहा है. सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा. लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट से शायद 2-4 साल 5 साल लाइफ बढ़ती है. मैं आपको कुछ विपरीत बताना चाहूंगा. एज ए किडनी स्पेशलिस्ट, अगर हमारे एक ट्रांसप्लांटेड पेशेंट की किडनीज 10-15 साल से पहले खराब हो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है. हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ा लिए हैं कि वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कि किडनीज 15 साल 20 साल 25 साल लास्ट करें, और जब दोबारा से अगर प्रॉब्लम भी आए तो एक और किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है. जहां तक डायलिसिस का सवाल है, हमारे अगर आप डायलिसिस यूनिट में जाएं, और आई एम नॉट सेइंग आवर ओन, मैं एक एज ए कंट्री के कुछ अच्छे सेंटर्स की बात कर रहा हूं जहां पे इट इज अ वेरी कॉमन थिंग टू सी पेशेंट्स हु हैव बीन ऑन डायलिसिस for over 20 years now. We used to believe कि जापान में ऐसा होता था, पर टाइम आ गया है देशवासी को बताने का कि हमारी कंट्री में भी people are surviving on dialysis for longer than 20 years. So बहुत होप है. हम आज बात कर रहे थे प्रिवेंशन की, बट गॉड फॉरबिड अगर प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है डायबिटीज नहीं होने दी, सेकेंडरी का मतलब है डायबिटीज को किडनी खराब नहीं करने दी, टर्शरी का मतलब है जब किडनी खराब हो गई तो इन लोगों को कैसे सालों साल डेकेड्स लॉन्ग लाइफ और गुड क्वालिटी की लाइफ देनी है. द बॉटम लाइन इज a good quality life, almost as normal a life as possible. So there is hope at every step. But हमें as patients, as common citizens, अपनी responsibility को समझना है, and we should contribute towards ensuring that India is a healthy country overall. Thank you. या थैंक यू वेरी मच सर. आपने हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया कि किस तरह के सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल है और आपके सेक्टर पर भी. एंड एज कंट्रीमैन वी आर रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट फॉर द ग्रेट वर्क व्हिच यू हैव बीन डूइंग फॉर द कंट्रीमैन. With this, I think we will conclude today's program, and I like to once again emphasize to our viewers that today you heard Dr. Kuller. He is acclaimed globally as an expert transplant physician for doing various complex procedures, setting up dialysis centers. But even a person of his expertise has today focused and talked about the prevention
importance of early screening, catching the disease early. So please understand that how important is this. He has elaborated कि किस तरह के patients हो सकते हैं जिनको high risk हो सकता है, किस age group में हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए और किस फ्रिक्वेंसी पर करनी चाहिए. सो दिस इज एन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू कैच योर डिजीज टाइमली, you will help yourself and you will be helping your doctor as well to provide you better care. So with this, we will conclude this program. But before saying you good night, I'll, for the final remarks, I'll once again hand it back to Dr. Kuller if he wants to say anything in the summary comments before we end. No. Well, thank you so much, Sanjeev ji, for this wonderful opportunity. And I just hope that this has proved to be a little bit useful to all the viewers who have joined us today. And just in case you have any queries, please feel free to post any questions on the link provided. I think I'll be more than happy to help you in whatever way I can. But at the end of the day, one more time, on the eve of World Kidney Day, which this year's theme actually is equitable care provision for all the patients who are suffering from kidney disease. But I think this always हमें annually एक opportunity देता है to discuss about the importance of healthy kidneys, and we should try to do whatever we can to prevent them from getting diseased. Thank you very much one more time for this wonderful opportunity. Thanks. Thank you. So, for all our viewers who joined us live, thank you. Those of you who would be listening to us later on, you can simply share the link of this program to anyone in your friends and family circle if they are having any risk factors related to kidney disease, or they are having, active kidney disease with them, or even to the normal people as well. This discussion, उनकी काफी मदद हो सकती है इससे, and they can really, be more wiser on this subject. With this, thank you so very much. If you have anything, more to understand about good kidney health, you have any problem related to kidney, you can meet Dr. Dinesh Kuller. He is the chairman of nephrology and renal transplant at Max Hospital, Saket. If you live far away from Delhi or North India, reach out to your nearest doctor as soon as you have those risk factors, or you get something in your screening. Thank you so very much and good night. Thank you, Dr. Kuller. Thank you.